वेलकम बैक। फाइनली हम आ चुके हैं pocketincoming के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में we are gonna go through a detailed walkthrough guides of Cynthia's Garchomp. So without any further ado, let's get started. So हम आ चुके हैं अपने पुलिंग स्क्रीन की तरफ. As you can see, I have around 15,000, almost 58. It's like something around 76, I guess. Something like that, or like that, 76, 77, I'm not sure. If you can calculate, you can do it. So here we go. First in rolls, okay, sure, okay, rolls. I can decompose it, that's fine. Okay, so I managed to get myself 3 and red shots and other mats. Okay, second. Do I really need Terrakion? Starts अच्छा है. Okay, that was my second build. ठीक है. Third. Not sure. Okay. Fourth, Zubat. Okay, fine. Oh. Okay. Artigono. Okay, fine. I guess that was my fifth. Sixth, Gyarados. Okay. Already 11 stars, 12 stars. Sorry. Seventh, Onyx. Okay. Now let's go to singles. Oh. Okay, nice. Okay, so here we go. Now we are on singles and 8 pulls. Now let's keep pulling. 1, 2, 3, 4. GG. Early. Garchomp. Gentle nature. Speed perfect. That's really good. I really need my Garchomp to be at speed. That's really good. I just got a Garchomp, the perfect one. Let's see which one I got. Others are useless, but I might get my Shelgon to 11th highest star as I can. But 5, okay, that's good actually. I'm able to get it, but I think as around spin. This is completely okay. I can just completely star upgrade myself. Yes, just right now yet. Wait, let me just quickly speed my up. Alright, here we go. अभी just spin कर देता था. Okay, let's go. We cool. Here's my Garchomp. So as you can see, Garchomp, gentle nature. It kinda reduces my special defense and increases my special defense. मतलब physical defense को कम करता है, special defense को करता है. क्या बोल रहा हूँ मैं, इतने बार खेल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा. Okay. Let's build him. Alright, so let's understand our Garchomps, our Cynthia's Garchomps, every single passive gets indeed in this detailed guide video. So let's get started with the basic skills. Alright, so Cynthia के Garchomp की अपनी कुछ basic skills है. So let's quickly go through that skills and understand how it works. तो first की move आती है, that is अपने Tyrannosaurus Rage. बेसिकली क्या है करता है, ये तुम्हारा 100% फिजिकल डैमेज डील करता है, प्लस 11,000 का ये अपना फिजिकल डैमेज डील करेगा. ठीक है, और ये तुम्हारे Garchomp को फिजिकल डैमेज का बूस्ट अप देगा फॉर 2 राउंड्स के लिए. ठीक है, इसका लाइक लुक्स लाइक अपने Cynthia के Garchomp की सेकंड स्किल, दैट इज वुंडेड स्टैंड. बेसिकली ये तुम्हारे सिंगल टारगेट को डैमेज डील करता है और ये 180% तुम्हारा फिजिकल अटैक डैमेज डील करता है और 23,000 का ये तुम्हारा फिजिकल डैमेज डील करेगा. प्लस ये तुम्हारे ओपोनेंट को एक वुंडेड स्टैंड मार्क में लीव करता है एंड जो भी तुम्हारे जो नेक्स्ट ग्राउंड टाइप मूव होगा वो ज़्यादा डैमेज करने वाले हैं उस ओपोनेंट के ऊपर. ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसे तुम्हारा Cynthia के Garchomp का डैमेज हो. कोई अगर तुम्हारी टीम में कोई भी ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है और उनका जो ग्राउंड टाइप मूव है वो ज़्यादा डैमेज डील करता है. सो दैट बहुत बढ़िया. एज यू कैन सी, एक वुंडेड स्टैंड मार्क मेरे Alakazam के ऊपर डैमेज डील हो चुका है, जो कि जो भी मेरे ग्राउंड टाइप के मूव है सारा डैमेज डील करने वाले हैं. तो बेसिकली इसके लिए बस यही चीज़ करता है. उसके बाद आती है अपनी Garchomp की अल्टीमेट बर्स्ट सांटू. बेसिकली ये स्किल में Cynthia का Garchomp अपना 400% फिजिकल डैमेज डील करता है, प्लस 23,000 का फिजिकल डैमेज डील करेगा. वही उसके ऊपर 2 राउंड के लिए एक सेक्रेट ब्रीज सैंड का एक मार्क लीव करता है और तुम्हारे ओपोनेंट के लाइनअप के इधर एक सैंड टूम का मार्क जो कि तुम्हारे ग्राउंड पे तुम्हें देखने को
मोस्टली तुम्हें दिखने को मिलेगा वो रिलीज़ करता है। सो एज यू कैन सी मेरे ओपोनेंट के लाइनअप के इधर कुछ एक सैंड टूम का मार्क आ चुका है। देन कम्स आर गार्चम्प पैसिव स्किल बर्सर्क शार्क अटैक। बेसिकली तुम्हारा बर्सर्क अर्थ जो कि अपनी गार्चम्प की फर्स्ट पैसिव स्किल है, तो बेसिकली ये तुम्हारे गार्चम्प का अर्थ पे का डैमेज 34% इंक्रीज कर दिया है एंड 20% का चांस है कि ये उसको डबल करेगा। देन कम्स अ सेकंड पास दैट इज ब्लडथिर्स्टी हंटिंग। इस स्किल में बेसिकली तुम अपने गार्चम्प से अपने जो फ्रंट बैक या कोई भी अपने अटैक का जो हमें रेस्ट्रिक्शन होता है तुम उससे इग्नोर कर सकते हो उसको। मतलब कोई भी अगर तुम्हारा जो एनिमी है उसका जो HP है 75% से बिलो है, तो अगर सपोज वो एनिमी बैक रो पे है तुम उस पर अपना अटैक हेड कर सकते हो। बट जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा जो एनिमी का है उसका जो HP 75% के बिलो हो एंड इसमें तुम्हारा गार्चम्प फाइल जा सकता है, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर कि वो जो तुम्हारा जो एनिमी पोकेमॉन है वो बैक रो पे है, हाइड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तुम्हारा जो गार्चम्प है उसको हिट कर सकता है, भले वो किधर भी हो कहाँ से भी हो। So for your skills, it starts matters a lot. Like let's say if you're 4 stars, so your basic skill जो तुम्हें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपने लेवल अप करने में, that should be your burst, then your passive skills, then your E skill, and then your basic skill. But let's say if you are at 7 stars or 10, then your main skill should be has always your burst, then your passive skill, and then your PvP attack bonus, and then PvP damage reduction, and then prioritize on your E skill and then your basic attack if तुम्हारे पास इतने resources है तो। Otherwise you can just completely ignore and just prioritize on your main things, that is burst, passive, your PvP damage bonus has a DPS, and your E skill. Otherwise that's really the more important things. If you want you can go for PvP damage, पर अगर तुम्हारे 10 stars नहीं है you can just completely ignore. It really doesn't really matter so much unless you रियली लाइक तुम्हारे पास कोई अच्छे टीम में टैंक्स है नहीं अवेलेबल ऑप्शन में, तो दैट टाइम इट मैटर्स, बट जस्ट प्रायोरिटाइज ऑन योर बर्स्ट एंड पैसिव स्किल एज योर मेन प्रायोरिटी। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट हिज हेल आइटम्स। सो फॉर हिज हेल आइटम्स, obviously his own hell item will be the best choice on him. But let's say if you're in F2B, so what should you aim for? So I will highly recommend you going for King's Rock on him, because King's Rock passive skill is really very great because it increases your speed bonus and also give you 18% chances तुम्हारे opponent को silence कर दे, which is really very great. Depends upon your breakthrough on it, but overall in my opinion King's Rock is really very great. Other health, you can use metal coat for physical damage purpose, or you can also use spring glove if you are in VIP. But let's say if you're just in complete F2B versions, then King's Rock, Metal Coat, or Dragon Fang I won't highly recommend you, because that is just like HP and speed bonus, which doesn't really give you much passive skill like your attack bonus or skill, something like that, as compared to your other health items. So for health, mostly aim for King's Rock, followed by Metal Coat or battle by Dragon Fang अगर तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं तो। Alright, let's talk about our trinkets. So for trinkets, mostly aim for your attack percent, सबसे ज़्यादा अपनी highest score increase करना, then get yourself an HP percent, and you can keep your defense low as much as you can. It really doesn't matter कि तुम अपना कौन सा रख रहे हो, just make sure कि तुम्हारा जो trinkets में तुम्हारा जो अटैक है वो सबसे ज़्यादा mainly focus हो, not also in levels but also in stars, awakenings and in scribe, जो कि अपना overall focus होना चाहिए। तो हम पोटेंशियल स्किल्स सबसे पहले जी सबको अपना अनलॉक कर देना एंड मैक्स तुम्हें किसको लाना है। फर्स्ट थिंग तुम्हारी आती है अपनी वायलेंट असॉल्ट। इसको सबसे पहला बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द
मेजर स्किल्स, देन यू शुड एम फॉर टू गेट योर दिस स्किल जो कि तुम्हारी अपनी चार्ज रीच आती है, बिकॉज गार्चम्प की मेन स्किल जो होती है किट होती है वो उसकी अल्टीमेट बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब तुम्हें अपनी अल्ट स्किल को तुम्हें जितना चाहिए हो सके उतना चलिए तुम्हें चार्ज करना होगा। सो इसके लिए चार्ज रेट तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आता है। एंड देन यू शुड एम फॉर योर एनचांस बेसिस स्किल जो कि तुम्हें अपने गार्चम्प का अटैक पर से इंक्रीज करता है। नाउ फॉर योर बेसिक पोटेंशियल्स, एम फॉर योर special attack bonuses and aim for crit and crit damage stats, and other than that you can completely ignore your other things, but if you have match you can go for it. I haven't unlocked this in my account yet, so I can't really discuss about this sadly. सो ऑलराइट, सो हैज़ गार्चम्प के अपने एक DPS के लिए उसे रूनस्टोन्स, चिप्स एंड अदर थिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर पड़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर गार्चम्प रूनस्टोन्स। सो इन द रूनस्टोन्स सेक्शंस तुम्हें जो रूनस्टोन्स जो सेट तुम्हें जो एम करना है दैट कैन बी ओवरऑल आई विल हाईली रिकमेंड यू टू हैव 6 pieces ऑफ पंच एंड 3 pieces ऑफ वॉल। लाइक बेसिकली ये तुम्हारे ओपोनेंट अपने गार्चम्प का फर्स्ट करके तुम्हें 9% से बूस्ट देता है हिज अटैक बोनस, दैट इज फिजिकल एंड स्पेशल अटैक बोनस। एंड 6 pieces सेट में ये तुम्हारे ओपोनेंट का जो डिफेंस स्टैट्स है वो 7% से इग्नोर करता है। एंड इन 6 pieces ऑफ वॉल लाइक ये तुम्हें अपना अटैक बोनस देगा 3% में जो कि अपना 3 pieces लाइनअप में, एंड 6 रेजोनेंस में ये तुम्हें अटैक बोनस देगा। दैट इज रियली ग्रेट फॉर फिजिकल DPS, बट इफ you can get, then I will highly recommend you to go for defense ignorance, because ये मोस्टली टैंक्स जो है होते हैं वो अपने बहुत उनके चंकीस होते हैं, दे आर रियली वेरी टैंकीस। सो हैविंग अ डिफेंस ignorance is really very great thing. Alright, let's talk about our chips. So as a DPS I will highly recommend you to go for 4 piece of लोन वुल्फ। बेसिकली ये तुम्हारे गार्चम्प का अटैक इंक्रीज करता है इन 2 piece सेट, एंड इन 4 piece सेट अगर तुम्हारा जो एनिमी वो अपने 70% HP के अबव है, ये 15% उसका स्किल डैमेज इंक्रीज करता है, विच इज़ रियली वेरी ग्रेट। जस्ट इमेजिन, एंड आई कैन ऑल्सो यूज एनी अदर ग्राउंड सपोर्ट्स, और इफ आई हैव एनीथिंग यू कैन यूज लाइनअप। सो सिंथा गार्चम्प majorly shines in either in dragon, ground or hybrid lineups. So let's talk about our dragon. So let's talk about each of his lineups. So his first lineup stands, let's say, Suicune be my Zygarde, Ash Greninja be my Groudon. T-Tar you can use him as your S tier, or you can also go for Shiny Mega T-Tar. You can use your Mega Diancie. So let's Aerodactyl be my Mega Diancie, and this, if you want, you can have this. If you have him, you can use this. If you don't have it, it's really fine. Dragon lineup was also completely fine if you have a dragon lineup. Like let's say Ash Greninja be my Zygarde, Shiny Mega T-Tar, Zygarde, Shiny Mega T-Tar. Let's Suicune be my Kyurem, and I also have like let's say I have Rayquaza, and then I can also use any kind of, like I have any other Pokemon which I can use, like let's say I have Xerneas, I'll put my Xerneas, and if I have Mega Diancie I can also put that. If you have any other Pokemon which is like worth putting, like let's say. Alright, that was all for the kids. Now let's me show you my exact builds and everything pretty quick, and then we will move on to our showcases. So let's go.
coldness grows like cancer, imitating happiness. Never mind on you and I, the shadows on the other side now. 'Cause I know you so well in the dark, but in my heart, you're nowhere. In my heart, you're nowhere.
the Garchomp is overall quite great. I really think at 4 stars he's quite a bit squishy. I do agree with that, but I think with a proper team or with higher stars, that actually can be ignored in his case. And he's quite really very fun to play. And if you really want to pull for him, you can pull for him if you really have planned for the dragons or ground meta teams. So thank you so much for watching this video. मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए see you next time. Till then, peace out.